that what unfolded was not merely a natural calamity, but a glaring indictment of administrative negligence. With over 177 millimeters of rainfall in just 8 hours, the city was submerged. Not only confusion and a complete breakdown of civic preparedness. Alerts were delayed, infrastructure crumbled, and citizens were left to the fend for themselves. This wasn't just a weather event, it was a failure of governance at every level. The city was lashed by over 177 meters of rainfall in just 8 hours. At the India Meteorological Department, IMD issued its red alert only after the Telugu had begun. The alert was revised multiple times from yellow to orange to red, creating confusion instead of clarity. The monsoon arrived 16 days early. But despite forecast, no proactive measures were taken. No drain cleaning, no emergency drills, no coordination. The city was left exposed. Hello. As the skies opened, Mumbai's infrastructure collapsed. Dahi saw recorded 188 millimeters, Kandivli 150 millimeters, and Chembur 65 millimeters in 1 hour. Low-lying areas like Andheri subway, Vakola bridge, and Lokhandwala complex were submerged. The Western Express Highway, a vital artery, became a parking lot of stranded vehicles. Trains were delayed, flights rerouted, and commuters forced the way through the waist-deep water. The city's lifelines were choked, and so was its governance. महाराष्ट्र के करीब पिछले 2 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। कई जिलों में
रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है और अगले 3 दिन भी अगर हम देखिए 21 तारीख तक विशेष रूप से महाराष्ट्र के आधे जिलों में कहीं रेड अलर्ट है, कहीं ऑरेंज अलर्ट है और इसके चलते बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जो एहतियात बरतनी है उसके बारे में अभी चर्चा की है। हमारी जो कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम से सारे जिलों में जो हमारी यंत्रणा है उस यंत्रणा को अलर्ट दिया गया है। अलग अलग जगह पर जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है वह मदद देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे में जो डिजास्टर आ सकता है उसका मिटिगेशन करने का प्रयास चल रहा है। हमारे बाजू के जो राज्य हैं, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, इनके साथ भी बातचीत करते हुए वहाँ से जो डिस्चार्ज पानी का है उसको ठीक से अगर मेंटेन करें तो बाढ़ की परिस्थिति न आए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से कोकण में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है वहाँ पर भी हम लोगों ने बाढ़ का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए इसकी व्यवस्था की हुई है। करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन जो है इसमें जो किसानों ने बुआई की थी तो उसका नुकसान हुआ है, उसको एक प्रकार से असेसमेंट करके उसको हम मदद करेंगे। साथ साथ नांदेड़ जैसी जगह पर कल मुकरमाबाद में 206 mm बारिश हुई है और इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर क्लाउड बस्ट इस प्रकार की वहाँ परिस्थिति थी। लोग काफ़ी अटके हुए थे। 206 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ है, मिलिट्री की भी टीम वहाँ पर पहुँची हुई है। वैसे ही मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। पिछले 8 घंटों में 177 mm बारिश मुंबई में हुई है और अगले 8-10 घंटे मुंबई में रेड अलर्ट है। बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होगी ऐसा बताया गया है। इसके चलते दोपहर के बाद स्कूलों को छुट्टी दी गई है और लोग जल्दी अपने घर पहुंचे और आवश्यकता हो तो ही बाहर निकले, इस प्रकार से भी लोगों को निर्देश दिया गया है। अगले 2-3 दिन मुंबई में बारिश रहने वाली है, विशेष रूप से हाई टाइड भी रहने वाला है। इसके चलते लोगों ने एहतियात बरतनी चाहिए, इस प्रकार से लोगों को बताया गया है। Across Maharashtra, the monsoon fury left a grim picture, with Chief Minister Devendra Fadnavis acknowledging widespread rainfall damage and issuing red and orange alerts for at least 15 districts, including large parts of Konkan, where rivers like Amba and Jagbudi rose above danger levels. Fadnavis reported that more than 4 lakh hectares of standing crops had been destroyed, hitting farmers hard, and assured that immediate relief and compensation would be provided. In Mumbai, civic preparedness was questioned once again as schools and colleges were declared shut only after 12 noon, by which time heavy rain had already flooded major junctions and left thousands of students, parents and commuters. Standard parents groups criticized the delayed decision, calling it a failure of foresight given the IMD's red alert the previous evening. Minister Girish Mahajan confirmed that heavy rainfall had inspired from the previous afternoon, with alerts sounded in 5 to 6 districts. As the situation worsened in Nanded, evacuations were already underway, with state disaster response force teams deployed to assist people marooned in low-lying areas. Such operations were launched for 4 to 5 persons reported missing in the floods, while the administration announced that food and water supplies would be arranged for the displaced. However, for those stranded in inundated homes, waterlogged hospitals and cut-off neighborhoods, these assurances felt inadequate, with many residents struggling without immediate relief. The contrast between official announcements and the ground reality highlighted
the mounting challenges faced by authorities in dealing with the scale of the disaster. राज्य में एक बारिश ज़्यादा हो रही है। कल शाम से कल दोपहर से ये बारिश शुरू है। 5-6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे है जहाँ पे रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट भी 6-7 जगह है और बारिश ज़्यादा हो रही है। जैसे उसमें नांदेड़ शहर जो है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है। वहाँ पे तो कई लोग मतलब गांव चारों तरफ से घिरे हुए पानी से, तो उनको निकाला जा रहा है। वहाँ के हमारे एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एक जगह सेना दल को भी हमने बुलाया है और शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश है। कोई कैजुअलिटी अभी तक नहीं है। कुछ जानवर डिस्प्लेस हुए हैं, मतलब पानी में बह गए हैं। उसके अलावा कोई मिसिंग 4-5 लोग अभी तक नहीं मिल रहे, लेकिन वो भी मिल जाएंगे। उनकी भी खोज जारी है और प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से हम पूरे परिस्थिति पे ध्यान रखे हुए हैं। कोई जहां भी लोग अटके हुए हैं उनको बाहर निकालकर अच्छी जगह, सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। In Matunga, a school bus carrying 6 children and 2 staff members was stranded for over 30 minutes. It wasn't the BMC or disaster management teams who responded, it was the Mumbai police who waded through the floodwaters to rescue them. Their courage was commendable, but their presence also underscored the absence of coordinated civic response. In Chembur, a retaining wall built by the MMRDA collapsed onto 7 shanties. Thankfully, no lives were lost, but the incident exposed the fragility of urban planning. At Ma General Hospital, patients were carried through flooded corridors. Pumps had to be deployed to the drained water, a scene more fitting for a disaster zone than a metropolitan hospital. Very good, very good. Sir, 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 sir. What's up? What's up?
And yet amid the chaos, the Mumbai Metro stood tall. Dry platforms of punctual trains and helpful staff afford a rare moment of relief. Their slogan, "No waiting, no getting drenched." Maha Mumbai Metro High now wasn't just clever marketing. It was quite indictment of the rest of the city's preparedness. This wasn't just a monsoon, it was a governance disaster. A predictable weather event turned into a humanitarian crisis because of the neglect, delay, and lack of accountability. Mumbai resilience was on display. So was its vulnerability. The people endured. The police acted. The metro delivered, but the government, it failed. Spectacularly, crisis Mumbai's resilience was on display. So was its vulnerability. The people endured. The police acted, but the system, it failed. Mumbai's response to the floods revealed both the strength of its people and the gaps in its systems. While the police and metro services provided much needed support, the broader civic response struggled to keep
pace with the crisis. The delayed alerts and lack of coordinated planning suggest that there is room for improvement in how such emergencies are managed. Going forward, a stronger focus on preparedness, timely communication, and infrastructure resilience will be key to ensuring that the city can weather future challenges more effectively. These are the updates of monsoon flood affected.